नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पाइथन का वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम पासवर्ड जनरेटर जनरेट करेंगे कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर पासवर्ड जनरेटर एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाए जिसमें आप किसी भी लेंथ अगर इनपुट देते हैं तो उस लेंथ का पासवर्ड आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको पाइथन में इंपोर्ट मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि कितने सारे मॉड्यूल्स हैं वो पाइथन में स्टोर्ड हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पाइथन जनरेशन पासवर्ड जनरेशन, दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज़ रैंडम एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल स्टोर्ड इन द पाइथन। तो आपको पाइथन मॉड्यूल को अपने पर्टिकुलर जुपिटर नोटबुक में स्टोर करने के लिए आपको जस्ट एक टाइप करना पड़ेगा कमांड इंपोर्ट स्ट्रिंग एंड देन आपको टाइप करना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम। इससे क्या होगा कि रैंडम और स्ट्रिंग जो मॉड्यूल हैं वो आपस में स्टोर्ड हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि अब हमें एक फंक्शन जनरेट करना है जिसका नाम होगा पासवर्ड जनरेटर, राइट। सो पासवर्ड जनरेटर का जो स्टेप फंक्शन डिफाइन करने का वो ये है, जेनरेट फंक्शन पासवर्ड, राइट। So what we are going to do is we are going to provide a length that will be of the input integer type और उसके बाद हमें डिफाइन करना है कि किस कैरेक्टर से, यानी कि जो कैरेक्टर होगी वो कहाँ से आएगी जिससे कि पासवर्ड जनरेट हो। तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर आपने स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है, स्ट्रिंग फॉर जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, तो स्ट्रिंग में जितने भी वैल्यू हैं, फॉर एग्जांपल आस्की की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आस्की अंडरस्कोर लेटर से आती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया LETTERS, ठीक है। अब देखो जितने भी वैल्यू कैपिटल और स्मॉल में आ गई वो सारी आस्की की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है। उसी प्रकार से अगर आपने फॉर एग्जांपल कि स्ट्रिंग डॉट मान लो कि डिजिट्स लिख दिया आपने, राइट, तो वो सारे डिजिट्स भी आ जाएंगे यहाँ पे उसके फॉर्म में। अब आपने स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन कर दिया, राइट, तो अब क्या होगा कि ये सारे के सारे पंक्चुएशन सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पे। हमें क्या करना है कि जिस भी लेंथ का हमको दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि 3 लेंथ, फॉर एग्जांपल आपने 3 लेंथ का पासवर्ड है, तो इन सभी कैरेक्टर में से कोई 3 रैंडम चॉइस होके हमारे पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया तो उस स्ट्रिंग में अटैच हो जाएगा। ये आपको प्रोग्राम का बेसिक समझ में आया। तो अब क्या करना है कि हमने लेंथ का स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया है, तो LENGTH एनीवन कैन करेक्ट, यस दिस वन। सो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है कि किस कैरेक्टर में से वो वैल्यू ली जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग में से जो आस्की वैल्यू है, यानी जो यहाँ पे हमने ऊपर में देखा है स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर्स, all we have to do is just copy it from here and paste it just the way like here. And also we want to do like string dot digits as well, right? So we will do string dot digits as well and string dot punctuatio and punctuations as well, so that we will be having a proper length of characters. Now what we have to do is we have to like generate a password based on that. So what we are going to do is we are going to do a join function that is going to do is just take a random choice from the characters list that we have, characters string that we have created, and it is going to join to the string of that value. For example, let me just put a random demonstration random dot, and we are going to have a choice of it. So from where this choice will be picked up, so this will be picked up from the chars, and then what we have to do is we are going to loop how many times we have to pick the character. So we are going to pick the characters of the length of how much a user has input. So for example, if a user has input 5, so this entire addition of a particular value to a string and the choice selection from these characters, all symbols will be picked up to 5 times, and then after that it is going to return the password, and that is the answer. So what we are going to do is we will be testing the program here as well. So what I am going to do is generate underscore ss, that's the spelling mistake, and we are going to see that we have done. And what we are going to do, we are going to take 4 length password. So if fingers are crossed, we should be getting the 4 length random password from this entire
collection of addition symbols that you can see. See, there is a problem. We have returned it, but we're just calling the function, which means we have to store it somewhere. So just for the value of a store, we are going to store it here in the store variable, and what we are going to do is we are going to print the store print, and that is where we are getting the error, just because this name is a little bit different than the one that is expected there. And see, we made a little error in the name, and now we have fixed it. So for example, if you are going to have a password of 8 characters, so this is the 8-bit character that you have here. For example, the random password selection that whenever you get from the Chrome's browser, it acquires of 32 characters, right? So this, every time the random value will be picked up to fill the value of random password whenever you pick it, and when you try to like enter it and run it again, this is how you are going to get it. So this was the demonstration of how to generate a random password for a particular string length value. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इस वीडियो से जनरेट पासवर्ड एल्गोरिदम बनाना सीख लिया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, बाय।